Students, today we will design the remaining portion, and it is our third session for this particular base frame design. So for that, you know very well, first of all, we will move on LDD platform because we can design this structure on LDD, right? So for that, first of all, we will go on start button, and after that I will choose Lego Digital Designer. And right now you can see it's loading now. An application is launching now. And after that, you know very well, we have a last file जिसपे हमने already work किया था, वो हमारी already file saved है, and we will pick this one. Yes, this one is Lego frame. इसको हमने लास्ट 2 सेशंस में हाफ एंड हाफ करके कंप्लीट किया था, एंड इन टुडे सेशन वी विल complete all parts of this particular structure, right? So first of all, I will click on that for open it. Now you can see it's loading now, and this is our model, but it is not complete right now. So for that, first of all, we need to assume, we need to focus, we need to understand this structure, and after that we will start designing, right? So for that, you can see here, अगर हम इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, you can see now कि यहाँ पर हमने ये वाले पूरे कंप्लीट फ्रेम को डिजाइन कर लिया है, बट राइट नाउ विच थिंग इज रिमेनिंग इन आवर स्ट्रक्चर? इट इज remaining, right? This portion is remaining. So for that, we will start designing. So I will move back on my LDD platform. As you can see here, यहाँ पर हमारा minimized Lego Digital Designer platform है. So we have to click on that, and now you can see the designing area, right? यहाँ पर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं. So for that, you need to follow some steps, and by the help of these steps you can easily design, right? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टर्न करेंगे. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने ब्लू कलर कनेक्टर पैग यूज किया है, बट राइट नाउ we need to set that kind of pin here. So for that, you need to remove this one. आप स्मॉल कनेक्टर पैग यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड देन यू कैन टाइप इन सर्च बॉक्स connector peg, because you need right now long black connector peg, and this one is small, right? So you have to type here connector, and you will receive one folder that is available here. It means shortlist हो जाएगा according to your search. So you have to expand by the help of this plus symbol particular folder, and after that you will take blue, or if you want to take black, if you want to take blue, then it is your choice. So I want to take blue one because मैंने already यहाँ पर blue use किया है, right? So I will take this blue long connector tag, and after that I will change the direction, right, like this, and now I am putting here. इससे क्या होगा, इससे अगर मैंने यहाँ पर रिमूव किया था ये ब्लैक कनेक्टर पैक जिससे मैंने इसको ज्वाइंट किया हुआ था, राइट? तो इसको मैं इससे ज्वाइन भी कर लूंगी, और अगर मुझे आउटसाइड पिन चाहिए इसकी तरह तो मैं उसको भी यूज कर लूंगी. इट मींस एक ही कनेक्टर पैक से मेरे दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? सिमिलरली मुझे क्या करना है, इसका क्लोन करना है और अदर साइड यूज करना है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के. So I will take this clone tool, and by the help of this clone tool, I can easily create a duplicate copy of this particular long blue color connector pack. And after that, I will change the work plane area direction, and after that, I will remove from here this particular black connector pack. But you can see here, आपका क्लोनिंग कंटिन्यू है, सो यू हैव टू स्टॉप इट बाय सेलेक्टिंग दिस सिंगल सिलेक्शन टूल. सो जस्ट क्लिक ऑन इट. इससे क्या होगा, आपका क्लोनिंग स्टॉप हो जाएगा, एंड यू कैन इजीली रिमूव दिस पिन फ्रॉम हियर.
and now you can set like this. Now it is completely okay, right? अभी हम ये जो हमारे एक्स्ट्रा ब्लैक कनेक्टर पैड्स हैं इनको हम डिलीट नहीं करेंगे बिकॉज मे बी ये हमें आगे हेल्प कर सकते हैं, इनकी हमें नीड हो सकती है, राइट? Right now I want to take this connector pad and cross axle both, so I will take this one. I'm just putting here, right? I'm just putting here like this. Similarly मुझे इसको other side भी set करना है, but before that I need one part, that is rim, right? But वो rim मुझे कौन सा यूज करना है वो important है, which is important, and this one is wedge belt wheel, right? So you have to type, because आपने अभी तक ये पार्ट अपने डिजाइन में यूज नहीं किया है तो आप इसको क्लोन नहीं कर सकते हैं, आप इसका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट यू नीड टू सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल wedge belt wheel. So you have to type here wedge belt wheel, right? Now you will receive once again one particular related search folder, and by the help of this plus symbol you can easily expand all the tools, all the parts, and you can take anyone which you want to take according to your requirement, right? So I want to take this one, this gray color wedge belt wheel, so I will click on it, and after that I'll put on work plane area, and in next step I will set here like this. You can see, बिकॉज आपको क्यों आपने क्रॉस एक्सेल कनेक्टर पैग यूज किया है, बिकॉज इस व्हील में, इस रिम में आपके पास प्लस पॉइंट था, राइट? यू कैन इजीली असेंबल. नाउ आपको यही सेम टास्क परफॉर्म करना है अदर साइड. सो बिफोर दैट, बिकॉज हम राइट साइड में मूव करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या यूज करने हैं, कनेक्टर पैग्स यूज करने हैं, और वो भी फ्रंट में, राइट? सो यू नो वेरी वेल कि हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टर पैग्स हैं, इसीलिए हमने उनको डिलीट नहीं किया था, मे बी हमें कहीं यूज हो इनका, राइट? सो आई विल पुट हियर one connector pad. I will take this one. Now I'm putting here. Yes. And I need one more black short connector pad because I need to put here. So for that, no need to find out, no need to search it. You can easily use clone, because by the help of clone you can create the similar part duplicate copy. So you will click on it, and after that you will set here, right? And in next step you need one more part, and this one is Technic brick. So for that you obviously you need to search it. So you have to type here Technic brick, right? जैसे ही आप Technic brick टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, you will receive 2 folders. आपको circular Technic brick चाहिए और या फिर straight. So you have to take straight one. So just click on plus symbol, and after that you will find out 1/14 Technic brick. It's 1/12, not 1/14. I hope 1/14 भी यहीं पर होगा. Yes, here it is, right? This one. So you can take this one easily and just rotate like this, and after that put like this, right? In this way you can easily assemble this Technic brick 1/14 size. Now move on to the next step, and in next step you have to set what? You have to set this cross axle connector peg other side. So for that you need to take clone tool and just take it from here, and after that change the direction like this, and now rotate the work plane area, and after that you have to select single selection, and by the help of single selection you can easily set here, right?
set here this part. So after that you need same wedge belt wheel. तो अगेन आपको दोबारा से सर्च नहीं करना होगा, आप क्लोन टूल यूज करें, टेक दिस वन एंड जस्ट पुट इट हियर like this. Now you can see the all view of this particular design. अभी तक आप देख सकते हैं जितना आपने इसको रेडी किया है in all these 3 sessions, right? अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट फर्दर पॉइंट पर. And the next further point is what? It's very simple. आपको क्या करना है, आपको एक न्यू पार्ट सेट करना है व्हील्स में. So for that you need to search it first, and this one is cross axle with knob, right? Cross axle with knob. So just close it, last search, and write here cross axle. आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स प्रेजेंट हो गए हैं. लॉट्स ऑफ रिजल्ट आर हियर. सो यू विल टेक दिस 3M cross axle with knob. Just take it from here, and after that you will move where, जहां पर आपके टायर्स प्रेजेंट हैं, right? And you will remove this plus symbol cross axle, and you will set this cross axle with knob, right? Like this. Yes, इससे आपकी टायर सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ये आउट नहीं होगा, ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा. तो you can take one more for other side, right? And after that you will rotate this particular work plane area, and you can take this one, and after that you will set like this. But before that you will remove the last one, right? And just put it here like this. Now you can see, right? Now move on to the next step, and in next step you need 2 connector packs, and for that you have to set here. One is here and another one is here. So you can easily clone from anywhere, because in this particular model we have lots of connector pack, we have lots of small black color connector pack. We have already used lots of connector pack in our structure. So for that you can use clone tool, and you will click on this connector pack and just put it here, right? And you can take one more from here, and now you can set like this, right? I hope it is perfectly done. Yeah, it is perfectly done. ये one pin हमें outside set करना है, right? Now it's done. Now move on to the next task, and it is very important task, and for that you need another part, and you know very well its name is angular beam, but its degree is 90, right? Angular beam. तो आप क्या करेंगे, आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे to find out the result. Yes, here it is, angular beam, and its degree is also 90. So take this one and just set like this. Yeah, like this, right? And after that you will take technique beam, and its size is 7M, right? Its size is 7M. Yes, lots of result are here. You can close this one, and you can expand this one, and you can take any 7M beam. This one is 5M. You want to take 7M. Yes, here it is, right? So you can take this one,
like this, and after that you will set here, right? And you will take one black connector pad, और आप कहाँ से ले सकते हैं, obviously आप यहाँ से clone कर सकते हैं, and then put like this, right? Now move on to the next step, and in a next step you need double cross block. You need what? You need double cross block. So you have to type here double cross block, and now you can see the result. So you can take this one, and for that you have to set like this and just put it here. Okay, आप देख सकते हैं आप wrongly सेट कर रहे थे इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था. राइट नाउ इट्स ओके. आपको ध्यान रखना है होल, इट मींस स्टड किस तरफ है. स्टड मींस होल्स, राइट? वो कहाँ है, तभी आप कनेक्टर पैड पर उसको सेट कर सकते हैं. Now move on to the next step, and in next step you need one tachomotor. So you can clone from here, right? You can clone from here. So you will click on clone tool, and after that you can take easily. आप इससे इसका duplicate copy easily create कर सकते हैं. Now you can change the direction like this, and after that you will use cross axles, right? आप देख रहे हैं यहाँ पर studs हैं, यहाँ पर प्लस सिंबल है, तो अगेन आपके माइंड में थॉट यही बिल्डअप हो जाना चाहिए कि आपको क्रॉस एक्सेल विद कनेक्टर पैग यूज करना है ताकि आप दोनों पार्ट्स को इजीली असेंबल कर पाए. सो यू कैन कैंसिल दिस वन and you can type here connector peg, and now you can see the result. Here it is. This one is connector peg cross axle, and you can take it, and after that you will set here like this, because इधर आपका प्लस सिंबल है. I will zoom in ताकि आप इसको बहुत ध्यान से देख सकें. ये देखिए आप यहाँ पर होल देख रहे हैं ताकि आप इसको इजीली कनेक्टर पैग से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस सिंबल है तो इसको आप क्रॉस एक्सेल से ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये क्रॉस एक्सेल विद कनेक्टर पैग यूज किया है. एंड नाउ वी विल सेट हियर, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल पुट लाइक दिस. बहुत केयरफुली हमें इसको एड ऑन करना है. विल सेट इजीली, don't worry, takes time, but you can do easily. ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये इजीली कंप्लीटली सेट हो जाएगा. नो नीड टू वरीड अबाउट इट. यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. अगर आप इसको प्रॉपरली सेट नहीं कर पा रहे हैं, then you can do in this way also, right? You can do easily, right? You can see here. Yes, now it's done. Right now you have to use one long black color connector peg, but before that you have to choose single selection tool, right? And now you will set here. So for that, before that you will set the position like this ताकि आप इसको easily set कर सकें. Yes. Now you will take black connector peg and the long one. So you will take from here and just put it here like this, right? Now move on to the next step, and in next step you need Technic angular beam, and its size is 3x5. So you have to type here Technic angular beam. We'll stop this, and you will easily find out here. Lots of result are here. So you can take 5x3, not 4x2. It's 3x5. Yes, you can take this one.
So I will take this one and now I will set the direction. Yes, like this. Now I will put here, and before that I will set one connector peg here, and again it's black color, so I will take from here, I will set like this. I will take one more, I'm just putting here, right? And I need one more. I need one more connector peg. So I will do one more clone and just put it here. Like this, correct? And now in next step, you have to set the direction, right? अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन को सेट करना है प्रॉपरली। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने इस ब्लॉक को आगे की तरफ सेट करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड कनेक्टेड सिलेक्शन टूल, and by the help of connected selection tool you can easily rotate anywhere all the parts together, right? So you have to use like this, right? Now you can see, so I want to take this particular part in front of the remaining design like this. मैं इसको यहाँ पर स्टेबल करना चाहती हूँ ताकि मैं इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकूं, राइट? जो ये मेरा इधर सेंसर मैंने सेट किया है, यहाँ पर मुझे इस ऑरेंज ब्लॉक को रखना है, राइट? सो फॉर दैट आई नीड टू रोटेट, गिव मी 1 मिनट, ओके, राइट? इसको मुझे रोटेट करना होगा लाइक दिस, इन दिस वे, एंड नाउ यू हैव टू सेट हियर. Now it is perfectly fine according to direction, because एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं in our image file. Yes, it is absolutely done. आपका ये वाला ब्लॉक इस सेंसर के साइड आपको सेट करना है, राइट? So go back on LDD. Yes. Right now we are on LDD and we will again use connected selection tool, because इससे क्या होगा, आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितने भी पार्ट अटैच्ड हैं वो सब, इट मींस जो कनेक्टेड हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे. तो आपको वन बाय वन हर एक पार्ट को सेलेक्ट करने की नीड नहीं होगी, अदरवाइज एक ही सिंगल पार्ट मूव होगा, बाकी रेस्ट वहीं पर छूट जाएंगे. सो बेटर है कि आप क्या यूज करें, कनेक्टेड सिलेक्शन टूल, एंड फॉर दैट नाउ यू हैव टू पुट हियर, yes, like this. Oops. Have to go back and try to set. Okay, give me 1 minute, I will minimize it, and now you will click on once again, yes, like this, and now you can rotate, move from here and try to set here like this. This is the actual position where we want to set it, right? अभी मुझे क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लॉक यहाँ पर इससे अटैच्ड नहीं है. सो फॉर दैट व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, सिंपली मुझे यहाँ से पहले सबसे पहले कनेक्टेड सिलेक्शन टूल को ओवर करना है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल सिलेक्शन टूल, ताकि मैं वर्क कर सकूं. एंड देन यू हैव टू रिमूव दिस पर्टिकुलर कनेक्टर बैग फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर लाइक दिस, एंड यू हैव टू पुट दिस वन हियर outside like this. And now you have to use a small beam, small size beam, not too much large. You can take this one also, you can take this one also. So I want to take this one, or I want to take, मैं 4 का भी यूज कर सकती हूँ. So this one is 5mm and 3mm. So I want to take this 3M.
and just put it here like this. So you can use in this way. Yeah, now it's fine, right? Now I'm going to delete. Now I'm going to delete what? Extra parts which are available in our work plane area. So I will take this delete tool and just click on it, and just click on this part also and this part also, right? Yes. And now you can see the complete design and the complete module. It is here, right? आप देख सकते हैं. I hope it is clear to all.